नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 278वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अंशुल चाहर। इनका मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये पहले भी हमारे IFPH प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, फिर भी मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। इन्होंने नेचुरोपैथी और योगा में डिप्लोमा किया है 2011 में। इन्होंने BHMS। काइंडली अपने आप को म्यूट कर ले। ये तो म्यूट। फिर उसके बाद इन्होंने BHMS किया और फिर MD होम्योपैथी में किया और अब यह PhD भी कर रही हैं स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर सीतापुर जयपुर से। ये यहाँ जून 2017 से जून 2023 तक एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और अभी ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकरी अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर है। इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, जैसे A literature review of acute rheumatic fever and its homeopathy, a case report, pityriasis, amenable to individualized homeopathy, etc. इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस और TV प्रोग्राम्स भी किए हैं। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। ये चेस रनर भी रह चुकी है और गर्ल्स क्रिकेट टीम की विनर भी है। इनका लक्ष्य है समुदाय को ठीक करना और स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को लागू करना। इनका आज का विषय है रेमेटाइड तकिया और होम्योपैथिक प्रबंधन। सो डॉक्टर अंशुल चाहर, आपका IFPH मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am, for such a nice introduction. Good evening. सबसे पहले मैं साहनी सर का और IFPH टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला और आज ये मेरा सेकंड वेबिनार है। आज का टॉपिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारी OPD में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर जितने भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो डे टू डे बेसिस पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हमें डेली OPD का हम ऑन एंड एवरेज देखें तो 30 to 40% हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स रहते हैं। तो एक बहुत कॉमन डिजीज है एल्डरली पर्सन्स में, ओल्ड एज पेशेंट्स में, इवन यंग जनरेशन में भी बहुत ज्यादा ये डिजीज मिलती है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस मैम, यू कैन शेयर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा कि नाम से क्लियर इसकी डिजीज। जस्ट मोमेंट मैम, प्लीज। सानी सर, आप अपने आप को म्यूट कर ले। आपके बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। ओके मैम, यू कैन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा कि ये डिजीज है, इसका नाम से काफी कुछ इसके बारे में क्लियर हो रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थ रेफर्स टू जॉइंट और आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। और रूमेटॉइड जो वर्ड है वो आया रूमेटिज्म से। जो रूमेटिज्म है वो मेनली मस्कुलर स्केलेटल इलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो मेनली ऑटो इम्यून डिजीज है, सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज,
सिमेट्रिकल होता है मीन्स इसमें जो भी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर वो एक साइड के जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है बॉडी में, तो दूसरी साइड में सेम जॉइंट आपके अफेक्टेड रहते हैं। क्रॉनिक होता है। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है जो कि स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम देखें तो इसमें मेनली हमारे स्मॉल जॉइंट अफेक्टेड होते हैं, और स्मॉल जॉइंट और पेरिफेरल जॉइंट्स अफेक्टेड होंगे। जैसे कि बॉडी में अगर एक्सियल स्केलेटन की बात करें, तो एक्सियल या सेंट्रल जो जॉइंट है बॉडी के, वो अफेक्टेड ना होके हमारी बॉडी के जितने भी पेरिफेरल और स्मॉल जॉइंट्स हैं वो इसमें अफेक्टेड रहते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज है, सिस्टेमिक है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है। मोर कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और ऑटोइम्यून डिजीजेस मेनली फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, तो ये फीमेल प्रीडोमिनेंस है इसका। और इसमें आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन से मिलते हैं, जिसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। Chronic systemic inflammatory disorder that may affect many tissues and organs. Different organs में क्या क्या कौन कौन से organ like skin है, blood vessels, heart, lungs and muscles, ये सब भी इसमें involve हो सकते हैं। Rheumatoid arthritis, it is a autoimmune disorder in which immune system identifies synovial membrane as a foreign and being attacking in on it. जैसा कि जो भी कोई भी साइनोवियल जॉइंट जो होता है, जिसमें जॉइंट का जो जॉइंट है वो मूवमेंट कर रहा है, तो जो भी साइनोवियल जॉइंट है उसमें जॉइंट की पेरिफेरी पे साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रहती है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसको ऑटोइम्यून डिजीज है, इस वजह से बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको ही एक एंटीजन की तरह ट्रीट करने लग जाती है, तो उसके ऊपर ही अटैक होता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पे मेनली ऑटोइम्यून डिजीज है, और इसमें जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं वो फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन को, जो कि खुद एक जॉइंट की प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे जॉइंट का एक स्मूथ मूवमेंट हो पाए उसके लिए नीडेड होती है, तो उसके ऊपर ही अटैक होने लग जाता है। विथ लॉन्ग टर्म और इंटेंसिव एक्सपोजर टू द एंटीजन, नॉर्मल antibodies become autoantibodies that target self antigen in the synovial membrane. Once the antigen or immune complex reaches the synovial membrane, antigen presenting cell deals with it. तो इस टाइप से ये डिजीज हमारी प्रोग्रेस करती जाती है। अब अगर रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस हम देखें, जितनी भी हमारी बॉडी में जितनी भी रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस हैं, वो मेनली जॉइंट, कितने जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की होती हैं, मोनो आर्टिकुलर, पोली आर्थराइटिस एंड ओलिगो आर्थराइटिस एंड पोली आर्थराइटिस। मोनो आर्टिकुलर मीन्स कोई भी बॉडी का एक जॉइंट इन्वॉल्व है, इसमें हो सकता है किसी जॉइंट पे कोई ट्रॉमा हो गया है, गाउट है, ओस्टियो आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड लाइम डिजीज। एंड ओलिगो आर्थराइटिस, जिसमें कि 2 to 4 जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसमें आता है मेनली सोराइटिक आर्थराइटिस, एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस। तो ओस्टियो आर्थराइटिस जो है वो मोनो आर्टिकुलर में भी आता है और ओलिगो आर्टिकुलर में भी आता है। एंड पोली आर्थराइटिस, दैट मीन्स 5 और मोर देन 5 जॉइंट्स, इसमें आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एसएलई। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेनली पोली आर्थराइटिस के अंदर में आता है, जिसमें कि मोर देन 5 जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें इसके मेन इंडिकेटिव फीचर्स क्या रहेंगे कि सिम्टम्स जो हैं, ये क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई पेशेंट को जॉइंट्स में पेन हो रहा है, 10 to 15 डेज प्रीवियस जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हुआ था, तो हम उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें सिम्टम ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 6 वीक ड्यूरेशन होना चाहिए, कि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मिनिमम 6 वीक्स के ड्यूरेशन के होने चाहिए, और एक बार वंस ऑफन लास्ट टिल द होल लाइफ ऑफ द पेशेंट। एक बार किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो वो उसके सिम्टम्स, वो डिजीज पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रन करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस है। इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस में मेनली क्या होता है? पाल्पेबल साइनोवियल स्वेलिंग। तो जो भी जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स है जहाँ पे वो जो स्वेलिंग है वो पाल्पेबल रहती है। इसके अलावा यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो मोर देन 1 आवर तक परसिस्ट करेगी, और इसके साथ में पेशेंट को फैटीग होता है। जैसा कि प्रीवियसली डेफिनेशन में था कि इस यहाँ पे जो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है वो सिमेट्रिकल होता है, पॉली आर्टिकुलर है,
यानी कि मोर देन 5 जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ पे जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स जो इन्वॉल्व है पेरिफेरल और स्मॉल जॉइंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसमें टिपिकली जो जॉइंट होते हैं वो है एक तो रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पो एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पो फेलिंजियल जॉइंट और पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट। ठीक है, तो मेनली जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें रिस्ट जॉइंट, एमसीपी मेटाकार्पो फेलिंजियल जॉइंट और पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स। टिपिकली स्पेयर सर्टेन जॉइंट्स। अब ये तो इन्वॉल्वमेंट हो गया कि स्मॉल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारा रिस्ट था, एमसीपी एंड पीआईपी। लेकिन जो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनमें आता है थोरेकोलंबर स्पाइन और डीआईपी, डीआईपी दैट इज डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट। तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेन एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में डीआईपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस जिन भी पेशेंट्स को होगा उनमें डीआईपी, ये डीआईपी जो जॉइंट है डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में डीआईपी जो है डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दूसरा जो जॉइंट जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता वो है थोरेकोलंबर स्पाइन। अगर हम बात करें हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम में मेनली हमारा सर्वाइकल स्पाइन जो है C1 एंड C2, ओनली ये C1 C2 इन्वॉल्व रहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। बाकी कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब इस चीज पे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता, बाकी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो इन्वॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो मेनली साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो जितने भी हमारे बॉडी के साइनोवियल जॉइंट्स होंगे उन पे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अफेक्शन हो सकता है। लेकिन जो थोरेकोलंबर स्पाइन है या सेक्रल स्पाइन है, वहां पे साइनोवियल जॉइंट नहीं होता, वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो थोरेकोलंबर स्पाइन और सेक्रल स्पाइन इन सब जगह पे फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, इस वजह से वहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अफेक्शन नहीं होता। ओनली अगर हम वर्टिब्रल कॉलम में देखें तो C1 एंड C2 वो दो ही इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है इसका इटियोलॉजी। तो जैसा कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मेनली इडियोपैथिक ओरिजिन के होते हैं। इडियोपैथिक ओरिजिन है जेनेटिक का अगर बात करें जेनेटिक्स इन्वॉल्वमेंट में, तो HLA-DR4 ओरिजिन होता है इसका। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि जो पर्सन सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनमें होने के चांसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। और फीमेल प्रीडोमिनेंस है तो हार्मोन्स का इम्पैक्ट बहुत होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके सिम्टम्स काफी कुछ सबसाइड कर जाते हैं और पोस्टपार्टम पीरियड में उसके अगेन रीअपेयर हो जाते हैं सिम्टम्स। इंसिडेंस की अगर बात की जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो मेनली अफेक्ट करता है अप्रोक्सीमेट 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है। और जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू मेल्स। फीमेल एंड मेल का रेशियो है 3:1। एज की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो 35 to 55 ईयर एज ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट है। और डिजीज का जो रिस्क स्टार्ट हो जाता है वो 25 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। 25 to 55 ईयर का जो एज ग्रुप है वो रिस्क ऑफ डिजीज का एज रहता है, उसी एज में सबसे ज्यादा ये डिजीज फ्लेयर अप करता है। फिर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस पिक्चर में है नॉर्मल जॉइंट, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नॉर्मल जॉइंट है जैसे कि साइनोवियल जॉइंट, प्रीवियसली हम डेफिनेशन में डिस्कस कर रहे थे कि साइनोवियल जॉइंट में जो दोनों जॉइंट सरफेस हैं वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से मूवमेंट प्रॉपर हो पाती है और आर्टिकुलर कार्टिलेज और जॉइंट इन दोनों को कवर कर रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर करता है। ये हो गया नॉर्मल जॉइंट। और ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, ओस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं और बोन जो है वो एक दूसरे पे रब करता है जिसकी वजह से बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर बात करें तो वहां पे आइटिस लग रहा है, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन तो है ही। आइटिस ओस्टियोआर्थराइटिस में भी है लेकिन ये मिसनोमर है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रही है वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बोन इरोजन होगा और बाकी पेन के सिम्टम्स आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हेल्दी जॉइंट जो कि हम अगेन दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि दो बोन्स जो साइनोवियल जॉइंट जो है वो कवर रहता है आर्टिकुलर कार्टिलेज से। और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है
Articular cartilage is a connective tissue that acts like a protective cushion. Articular cartilage जो थी बोन्स दोनों जो साइनोवियल जॉइंट है उसके दोनों साइड के बोन के ऊपर जो कवरिंग है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है जो कि कुशन प्रोवाइड करता है बोन को, जिसकी वजह से हमारी बोन का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो पाता है जॉइंट्स में। ये जैसे ये दोनों जॉइंट्स हैं, ये दोनों ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट में ये दोनों बोन के सरफेस पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि एक प्रोटेक्टिव कुशन का वर्क करता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज और बोन दोनों को कवर कर रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उससे साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है, और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो जॉइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जॉइंट में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है, और जॉइंट की प्रॉपर एक मूवमेंट अच्छे से फ्री मूवमेंट हो पाए इसके लिए भी साइनोवियल फ्लूइड की नीड होती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है। अब साइनोवियल जॉइंट connects to bone with a fibrous joint capsule that is continuous with the periosteum or outer layer of the both bones, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा। The fibrous capsule is lined with a synovial membrane that has cells that produce synovial fluid and remove debris. ये भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि synovial fluid जो है वो synovial membrane से secrete होता है और जॉइंट स्पेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सेलुलर डेब्रीज जो है वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करेगा, एंड जॉइंट का फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। Synovial fluid is normally viscous fluid. It helps to lubricate the joint. Together the synovial membrane and articular cartilage, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज थी जॉइंट सरफेस पे और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो दोनों को लाइनिंग कर रही है, ये जॉइंट का इनर लाइनिंग बनाते हैं। Rheumatoid arthritis is an autoimmune process that is typically triggered by an interaction between genetic factor and environment. इन दो जेनेटिक फैक्टर HLA-DR4 एसोसिएशन होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से रूमेटोइड आर्थराइटिस के सिम्टम या रूमेटोइड आर्थराइटिस डेवलप होता है। The increase in the synovial cells and immune cells. अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सेल्स साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है उसमें इम्यून सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी वजह से वहां पे एक हार्ड सरफेस क्रिएट हो जाती है जिसे पेनस बोलते हैं। तो ये पैथोग्नोमिक साइन होता है रूमेटोइड आर्थराइटिस का, पेनस है, और ओस्टियो आर्थराइटिस का पैथोग्नोमिक साइन होता है ओस्टियोफाइट्स। तो पेनस क्या है, इट इज ए थिक स्वॉलन साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो थी जॉइंट के बीच में वो थिकन हो गई है, वहां पे ग्रेनुलेशन और स्कार टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, WBCs वहां पे बढ़ जाती हैं, उस कंडीशन को पेनस बोलते हैं। ओवर टाइम द पेनस कैन डैमेज कार्टिलेज एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑल्सो इरोड बोन। धीरे धीरे टाइम के साथ में ये जो पेनस है ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, सॉफ्ट टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से बोन जो है बोन में इरोड कर जाएगी बोन। एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स ऑल्सो सिक्रेट प्रोटीएजेस विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। साइनोवियल सेल्स जो है वो प्रोटीज सिक्रेट करेंगी, जिसकी वजह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो थी बोन की कवरिंग जो है उसको भी डैमेज कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, विदाउट द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज the underlying bones are exposed and can directly rub against each other, और उसके वजह से पेशेंट को पेन होगा। ये नॉर्मल इस पिक्चर में वन साइड में नॉर्मल जॉइंट है और दूसरी साइड में रूमेटोइड आर्थराइटिस के केस में जो पेनस फॉर्मेशन है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम्ड कर गई है और वहां पे सेलुलर डेब्रीज इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से जो हार्डन्ड सरफेस बन गई है उसको पेनस बोलते हैं। इस वजह से बोन भी इरोड हो रही है और पेनफुल कंडीशन डेवलप हो रही है। अब आता है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें रूमेटोइड आर्थराइटिस के केस में तो बहुत वेरिएबल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में मेनली क्या होगा, इसमें सिमेट्रिकल स्वेलिंग होगी। जो भी रूमेटोइड आर्थराइटिस जो है, जैसा कि हमने इनिशियली डेफिनेशन में देखा था कि इसमें सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो भी जॉइंट इन्वॉल्व यदि राइट साइड में है वही आपके लेफ्ट साइड के एरियाज में होता है। Symmetrical swelling of the multiple joints with tenderness and pain is the characteristic. Joint pain aggravate in the morning. Joint pain जो होगा रूमेटोइड आर्थराइटिस के केस में वो मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज्यादा होगा एंड इम्प्रूव विथ एक्टिविटी एंड बेटर इन द इवनिंग। अब माइंड में ये आ सकता है कि जॉइंट पेन जो है वो मॉर्निंग में ज्यादा हो रहा है, एक्टिविटी के साथ में इम्प्रूव कैसे हो रहा है।
क्योंकि क्या होगा, जब हम एक्टिविटी करते हैं तो मेनली क्या हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वहां पे इन्फ्लामेशन था तो मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे मॉर्निंग के बाद में पेशेंट की एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो वो जो डेब्रीज इकट्ठी हो गई हैं साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती हैं। उस वजह से मूवमेंट के साथ में ये पेन जो है वो आपका कम होता जाता है। ऐसे ही जॉइंट स्टिफनेस होगा, वो भी मॉर्निंग में ज्यादा होगा। जॉइंट स्टिफनेस एग्रावेट इन द मॉर्निंग, मोर इन द मॉर्निंग, और स्टिफनेस जो है वो भी मोर देन 1 आवर इम्प्रूव विथ एक्टिविटी। तो मॉर्निंग स्टिफनेस और जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, ये दोनों ही कंडीशन जो है वो मॉर्निंग में ज्यादा रहती है और मोर देन 1 आवर रहती है, और एक्टिविटी के साथ में इन दोनों कंडीशन में इंप्रूवमेंट होता है। इन RA both the pain and stiffness improve with activity। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या हो रहा है, जो पेन है और स्टिफनेस है वो दोनों ही एक्टिविटी के साथ में इंप्रूव कर रही हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इससे डिफरेंस है। वहां पे क्या हो रहा है, स्टिफनेस इज इंप्रूव बाय मोशन बट पेन वर्स बाय मूवमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में स्टिफनेस में तो मूवमेंट से रिलीफ मिल रहा है बट पेन जो है वो मूवमेंट से वर्स हो रहा है। नेक्स्ट इसमें मोर देन 6 वीक ऑफ पेन, स्वेलिंग, और जैसे कि हमने देखा कि इन्फ्लामेशन है यहाँ पे, आइटिस जहाँ पे भी है वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस, इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइंस जो हैं, पेन है, स्वेलिंग, टेंडरनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये सारे वहाँ पे रहेंगे। वार्मथ रहेगा इन 1 और मोर पेरिफेरल जॉइंट्स, फ्रिक्वेंटली विथ सिमेट्रिकल इन्वॉल्विंग wrist, hand or feet, and often associated with more than 1 hour of morning stiffness। अब अगर आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट्स का बात की जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो मेनली आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस इसकी वजह से होते हैं। तो आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो अपर एक्सट्रीमिटीज को इन्वॉल्व कर सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को इन्वॉल्व कर सकता है, और जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पेयर रहेगा, वहां पे कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा एक्सेप्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसमें भी C1 C2 जॉइंट। तो आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में 3 टाइप का है, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड सर्वाइकल स्पाइन में, और उसमें ओनली C1 C2 जॉइंट अफेक्टेड रहता है। तो अपर एक्सट्रीमिटीज की अगर बात करें तो अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट किसको करेगा, रिस्ट जॉइंट को, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, MCP जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, PIP जॉइंट। ये 3 को अफेक्ट कर रहे हैं, रिस्ट, MCP एंड PIP। DIP स्पेयर्ड, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो है वो इसमें अफेक्ट नहीं होता, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अफेक्टेड रहते हैं। और फ्लेक्सर टेंडर साइनोवाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस रहता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट, जो भी जिस भी जॉइंट को अफेक्ट करेगा ये हैंड्स में, वहां पे रेंज ऑफ मूवमेंट उसकी कम हो जाएगी, पेशेंट का जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, और पेशेंट जो भी फिंगर इन्वॉल्व है उसकी वजह से वो फिंगर पूरा फोल्ड नहीं हो पाएगा, फिंगर मूवमेंट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ट्रिगर फिंगर रहेंगी इसमें। डिफॉर्मिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो डिफॉर्मिटीज होंगी वो नॉन रिड्यूसिबल हैं, कि एक बार हो गई तो वो वापस रिड्यूस नहीं कर पाएगी, वो इरिवर्सिबल होती हैं डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज में आता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बटनरी डिफॉर्मिटी, जेड थंब, MCP सबलक्शन, अल्नर डेविएशन, पियानो की साइन, जॉइंट डिस्ट्रक्शन एंड फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर ऑफ एल्बो। इनकी एक एक 1 by 1 इमेजेस। स्वानिक डिफॉर्मिटी और बटनरी डिफॉर्मिटी, ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। स्वानिक डिफॉर्मिटी, जैसे कि नीचे इमेज में स्वान है, तो ये जो स्वान है इसका जैसा नेक होता है, टिपिकल वैसा ही नेक इसमें स्वानिक डिफॉर्मिटी में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, PIP इन हाइपर एक्सटेंशन। तो ये जो आपका PIP जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो है, यहाँ ये एक्सटेंडेड नहीं, हाइपर एक्सटेंशन है, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन है PIP का, और जो ये DIP है, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट है, इसका फ्लेक्शन है। PIP का हाइपर एक्सटेंशन और DIP का फ्लेक्शन, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जस्ट लाइक ये स्वान का नेक है, एकदम टिपिकल वैसा ही आपका फिंगर का इसमें रहेगा। दूसरा है बटनरी डिफॉर्मिटी, ये इसका स्वान नेक डिफॉर्मिटी का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा, PIP जॉइंट जो है, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो है, वहां पे फ्लेक्शन है। स्वानिक डिफॉर्मिटी में हाइपर एक्सटेंशन था, यहाँ पे फ्लेक्शन है इसमें,
और डीआईपी जॉइंट जो है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है, वहां इसमें हाइपर एक्सटेंशन है, स्वानिक डिफॉर्मिटी के टाइम पे फ्लेक्सन था। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट कंडीशंस हैं। फिर इसमें थर्ड स्वानिक डिफॉर्मिटी का एक और इमेज है, बटन होल डिफॉर्मिटी या बटनरी डिफॉर्मिटी। फिर नेक्स्ट आता है जेड डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब। जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब में क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट इंटरफेरेंजियल। जो थंब है, थंब में ओनली फिंगर्स में 2 होते हैं, पीआईपी एंड डीआईपी, थंब में ओनली 1 है, तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी जो है उसका हाइपर एक्सटेंशन है, एंड सबलेक्शन ऑफ फर्स्ट एमसीपी। फर्स्ट एमसीपी उसका सबलेक्शन है, जिसकी वजह से थंब जो है वो टिपिकल जो इंग्लिश अल्फाबेट जेड है, जेड की तरह हमें रिप्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है अपर एक्सट्रीमिटीज हैंड्स में पियानो की साइन। पियानो की साइन क्या होता है, जैसे कि इनिशियल सिम्टम्स में भी था कि अल्नर डेविएशन हो रहा है। जो भी अफेक्टेड पेशेंट होंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, उसमें जितने भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट रहते हैं, उसके साथ में अल्नर डेविएशन है, हैंड्स का अल्नर डेविएशन है, अल्ना की साइड में हमारा हैंड डेविएट कर जाता है। तो पियानो की साइन में क्या होगा, मेनली ये जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो होगा उस पे अगर प्रेस किया जाएगा, तो जैसे पेशेंट का फोर आर्म है उसको हमने इस पोजीशन में रखा हुआ है, और उसके बाद में ये जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है उस पे अगर प्रेस किया जाएगा, तो क्या हो रहा है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो उसमें पार्शियल सबलेक्शन है, मींस पार्शियली वो डिस्लोकेट हो चुका है अल्नर डेविएशन की वजह से। तो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के सबलेक्शन की वजह से अगर यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये एकदम नीचे की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही हम प्रेस हटाएंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे, तो पियानो की तरह वो वापस से ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसको पियानो की साइन बोलते हैं। तो पियानो की साइन इज seen when a protruding ulna is found, and the forearm is demonstrated by depressing the ulnar head and is spring back into the position like a piano key. मेन इन्वॉल्वमेंट जॉइंट है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये इसमें इमेज में ये जो आपका डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, मेनली इस पे प्रेस करने से इफेक्ट आता है। फिर आता है, ये था अपर एक्सट्रीमिटीज की बात। अब हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या है, इन्वॉल्वमेंट होता है। अपर एक्सट्रीमिटीज में एमसीपी जॉइंट था, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो एमटीपी जॉइंट है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अलावा वहां पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एंकल्स जो हैं उनका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मिल रहा है हमें, और मिड टार्सस जो है वहां पे भी इन्फ्लामेशन मिलेगा। तो मिड टार्सस जो एरिया है उसका इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, ये नॉर्मल फुट है, नॉर्मल फुट में क्या होता है, आर्क ऑफ फुट रहता है, लेकिन मिड टार्सस का इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, लीड्स टू पेस प्लेनोवेल्गस। पेस प्लेनोवेल्गस क्या है, फ्लैट फुट हो जाएगा। ओके, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के इन्वॉल्वमेंट में है, एक तो एमटीपी जॉइंट है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है एंकल्स का और मिड टार्सस का, जिसकी वजह से फ्लैट फुट होगा। फिर आता है, हमने जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज की बात कर ली, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात हो गई। अब आता है आपका सर्वाइकल। यदि हम सर्वाइकल स्पाइन देखें तो सर्वाइकल स्पाइन में ओनली C1 C2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। C1 C2 सर्वाइकल स्पाइन सबलेक्शन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, C1 C2 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। अब व्हेन सस्पेक्ट सर्वाइकल स्पाइन सबलेक्शन, हमें कब लगेगा कि सर्वाइकल स्पाइन सबलेक्शन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग सीरो पॉजिटिव RA, जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनमें सीरो पॉजिटिव RA हैं, यानी कि उनमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, एंटी सिटुलेटेड साइक्लिक पेप्टाइड जो है वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसके साथ में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी पॉजिटिव हैं। उन कंडीशन में अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एंड प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी कंडीशंस हैं, और उसके साथ में अगर पेशेंट को रिकरेंट ऑक्सीपिटल हेडेक रह रहा है, बहुत ज्यादा बार बार उसको ऑक्सीपिटल हेडेक है, नेक एरिया में पेन है, डिक्रीज नेक रेंज ऑफ मूवमेंट, डिक्रीज नेक आर्म, डिक्रीज नेक रेंज ऑफ मूवमेंट, अगर पेशेंट को राइट या लेफ्ट साइड में नेक को मूव करना है तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में आएगा वीकनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। तो अगर ये सब कंडीशंस हैं और पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग सीरो पॉजिटिव RA है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं, तो उस कंडीशन में
सर्वाइकल स्पाइन सबलेक्शन होता है और C1 C2 जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसमें मेनली दो टाइप के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो जनरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। तो जनरल या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में क्या होगा, फैटीग होगा पेशेंट को, मैलेज है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगने की वजह से पेशेंट का वेट लॉस होता जाता है, डिप्रेशन एंड वीकनेस, ये उसके जनरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पेशेंट में मिलेंगे। इसके अलावा ऑर्गन स्पेसिफिक अगर हम देखें तो सबसे पहले हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हार्ट के इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, ऑल लेयर ऑफ द हार्ट अफेक्टेड, हार्ट की सारी लेयर अफेक्ट है जिसकी वजह से पेनकार्डाइटिस की कंडीशन होगी, और आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डाइटिस का अफेक्शन भी इसमें हो सकता है। तो पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन चेस्ट पेन में रेडिएट टू आर्म, चेस्ट पेन जो है वो आर्म में रेडिएट कर रहे हैं, दैट डिक्रीज बाय लीनिंग फॉरवर्ड, दैट डिक्रीज बाय लीनिंग फॉरवर्ड एंड प्रेसिंग चेस्ट एंड इंक्रीज बाय लीनिंग बैकवर्ड। चेस्ट पेन है वो रेडिएट कर रहा है आर्म में एंड डिक्रीज हो रहा है लीनिंग फॉरवर्ड पे एंड प्रेसिंग चेस्ट में एंड इंक्रीज बाय लीनिंग बैकवर्ड ड्यू टू, क्योंकि बैकवर्ड अगर पेशेंट लीन करेगा, पीछे की तरफ झुकेगा, तो पेरिकार्डियम स्ट्रेच हो रहा है, पेरिकार्डियम स्ट्रेच होगा उसकी वजह से उसको पेन होगा, तो इसलिए लीनिंग फॉरवर्ड के टाइम पे उसको पेशेंट को पेन रहता है। इसके अलावा हार्ट में मायोकार्डाइटिस भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स में क्या अफेक्शन मिलेगा हमें, प्लूराइटिस विद प्लूरल इफ्यूजन, प्लूराइटिस होगा उसके साथ में प्लूरल इफ्यूजन है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मिलेंगी जिसमें कि फाइब्रोसिस मिलेगा लंग्स में, यहाँ पे जो फाइब्रोसिस मिलेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से वो बेस ऑफ लंग पे फाइब्रोसिस रहेगा। आइस, आइस के इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में आइस जो है वो रेड आइस मिलेंगी, केरेक्टो कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आइस, पेशेंट को जो सेंसेशन होगा, पेशेंट का ये कहना होगा कि उसे आंखों में जैसे मिट्टी चली गई हो, सेंट इन द आइस सेंसेशन रहेगा, और ड्राई माउथ होगा, कांट चू एनीथिंग हार्ड, कुछ भी हार्ड सब्सटेंस वो चू नहीं कर पाएगा, जैसे कि शॉर्जन सिंड्रोम है उसमें ये दोनों सिम्टम रहते हैं, तो काफी कुछ शॉर्जन सिंड्रोम के सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस रहेंगे, एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। फिर आता है नर्व इन्वॉल्वमेंट। नर्व इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था, हमने जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट में अपर एक्सट्रीमिटीज में देखा था कि एक तो रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, एमसीपी और पीआईपी, तो रिस्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे जो कार्पल अपनी मीडियन नर्व जो आती है, मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। मीडियन नर्व का कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो टेंडन जा रहा है उसके नीचे से जो मीडियन नर्व जा रही है उसका कंप्रेशन हो जाएगा, उस कंप्रेशन की वजह से ही रिस्ट ड्रॉप होगा और अल्नर डेविएशन के सिम्टम हमें मिलेंगे। इसके अलावा नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप भी हमें देखने को मिल सकता है। फिर आता है स्किन। स्किन के इन्वॉल्वमेंट में अगर देखा जाए तो रूमेटॉइड नोडुल्स हमें मिलेंगे। रूमेटॉइड नोडुल्स क्या होंगे, सबक्यूटेनियस, जैसा कि पिक्चर में देखने को मिल रहा है सबक्यूटेनियस होते हैं, और जो पेरियोस्टियम है उसके अडहेरेंट रहते हैं, और हमेशा मोस्टली जो रूमेटॉइड नोडुल्स मिलेंगे वो एक्सटेंशन सरफेस ऑफ द एल्बो, ऑन एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द एल्बो, sacrum and occiput, and also can on lungs, heart and serous membrane. नेक्स्ट है बेकर, स्किन में नेक्स्ट है बेकर और पॉप्लिटेल सिस्ट। बेकर और पॉप्लिटेल सिस्ट कहाँ होती है, जस्ट बिहाइंड द नी, पॉप्लिटेल फोसा जो होती है वहां पे होती है ये बेकर सिस्ट, इसलिए इसको पॉप्लिटेल सिस्ट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये रप्चर हो सकती है। वैसे बेकर सिस्ट या पॉप्लिटेल सिस्ट होती है वो सेल्फ लिमिटिंग भी होती है, लेकिन पेन इसमें बहुत होता है, और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये टाइम के साथ जो इंक्रीज इसका साइज हो रहा है तो वो रप्चर भी कर सकती है, और ये बेकर सिस्ट जो है वो नॉन पल्सेटाइल होती है। हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स में आता है एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस और इओसिनोफिलिया। फिर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 में से अगर मिनिमम 4 क्राइटेरिया अगर पेशेंट में मिलते हैं तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कैटेगरी में आएगा। 7 में फर्स्ट है मॉर्निंग स्टिफनेस lasting at least 1 hour. Second, swelling in 3 or more joints, swelling in hand joints, symmetrical joint swelling, erosion and decalcification on X-ray of the hands, rheumatoid nodule,
एबनॉर्मल सीरम रूमेटॉइड फैक्टर, जो सीरम रूमेटॉइड फैक्टर है वो एबनॉर्मल है या इंक्रीज है। तो इन सातों में से कोई भी 4 क्राइटेरिया अगर पेशेंट में मिल रहे हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव होगा। फिर आता है डिजीज कैसे प्रोग्रेस होती है। फर्स्ट स्टेज इनिशियली क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्प्रेड टू आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। इसकी वजह से क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट विथ पेन एंड मसल स्पाज्म। सेकेंड स्टेज में ग्रेनुलेशन टिश्यूज फॉर्म हो जाएंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन में एंड स्प्रेड टू पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज, पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज में स्प्रेड कर जाता है, कार्टिलेज में डिसइंटीग्रेशन एंड जॉइंट फिल्ड विद द ग्रेनुलेशन, थिकनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड impaired जॉइंट मूवमेंट परमानेंटली। स्टेज थर्ड में होता है ग्रेनुलेशन टिश्यूज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज में, जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट जो है वो और कम हो जाएगा। एंड फोर्थ स्टेज में परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाएगा, डिफॉर्मिटी जो वो डिसेबिलिटी में हो जाएगी। अब आता है डायग्नोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस में सिट्रुलिन एंटीबॉडी टेस्ट, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट आर यूजुअली run to help make a diagnosis of rheumatoid arthritis. These tests check for certain antibodies including anti-cyclic citrulinated peptide antibodies ACPA, जो कि मेन होता है इसमें, rheumatoid factor RF and anti-nuclear antibodies ANA, which are present in majority of the RA patients. Rheumatoid factor is present in about 75 to 80%. And a high RF may indicate more aggressive for the disease. Next है an advantage of, अब रूमेटॉइड फैक्टर जो है RF है, इसके बजाय हम ACPA टेस्ट करवाते हैं ज्यादा, क्योंकि ACPA टेस्ट जो है वो डिजीज की इनिशियल स्टेज में भी पॉजिटिव आता है, तो हम ट्रीटमेंट को ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं अगर ACPA टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है किसी का। ACPA टेस्ट is that they can often detect disease earlier on and sooner treatment begins, better the patient can manage the disease. Next, the presence of anti-nuclear antibodies is not a definitive diagnosis for RA. ANA definitive diagnosis नहीं है, but their presence can indicate the doctor that can autoimmune disorder may be present. क्योंकि ANA और बहुत सारी conditions में भी positive रहता है। Next है another blood test that can measure inflammation is C-reactive protein, CRP test positive. फिर next हम कर सकते हैं joint X-ray. Another test used to diagnose rheumatoid arthritis is X-ray. Earlier, अब डिजीज के एडवांस अर्ली स्टेजेस में एक्सरे हेल्पफुल नहीं है, लेकिन एडवांस स्टेज में एक्सरे के थ्रू हम काफी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्ली इन द डिजीज एक्सरे आर नॉट हेल्पफुल बिकॉज दे डू नॉट शो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, but they can useful in later stages to monitor how the disease progresses over time because they show bone erosion. Another imaging test used to include bone density scan, DEXA scan, ultrasound and MRI. मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल मैनेजमेंट लेंगे, उसके बाद में होम्योपैथिक मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में आता है फोकस ऑन रिलीविंग पेन, जो पेशेंट को बहुत ज्यादा जो सफरिंग है उससे हमें पेशेंट को रिलीव करवाना है। प्रिवेंटिंग डैमेज एंड डिसेबिलिटी, जो भी डैमेज जॉइंट का जो डैमेज हो रहा है या डिसेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन अबाउट द डिजीज, पेशेंट को डिजीज के बारे में एजुकेट करना है। देर आर थेरापेटिक एक्सरसाइजेस, कुछ एक एक्सरसाइजेस हैं जो कि डिजीज कंडीशन को एग्रावेट ना हो उसके लिए हमें नीडेड रहती है, सच एज फिजिकल थेरेपी दैट इज प्रेस्क्राइब, दैट कैन हेल्प विथ स्ट्रेंथ देता है जॉइंट को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, और जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है उसको हम स्पेसिफिक जॉइंट, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उस स्पेसिफिक जॉइंट में हम कौन सा एक्सरसाइज करवाएं, कौन सी थेरापेटिक एक्सरसाइज करवाएं जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिले, उसका जॉइंट मूवमेंट जो है वो प्रॉपर मैनेज रह पाए। फिजिकल थेरेपी फॉर स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, इसमें कुछ एक एक्सरसाइजेस के मैंने ओनली नेम दिए हैं। टू टाइप की एक्सरसाइज, टू टाइप से हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एक तो जब डिजीज का फ्लेयर अप है, डिजीज लाइक डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो पेनफुल
उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत पेन है, और एक उस कंडीशन में जब पेन काफी कुछ हद तक सबसाइड कर गया है, क्योंकि एवरी टाइम पेन की सीवियरिटी सेम नहीं रहती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो जब पेन बहुत ज्यादा है उस टाइम पे हमें कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, उनमें मेनली सूक्ष्म व्यायाम आते हैं। और जब डिजीज डिक्रीज पेन है उस टाइम पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो ड्यूरिंग पेन क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम, उनमें आता है हैंड क्लेंचिंग। हैंड क्लेंचिंग में क्या होता है, हमारे जैसे सूक्ष्म व्यायाम जो हम करते हैं कि हैंड्स को हम स्ट्रेचिंग करके रखेंगे और क्लेंच करना है, लाइक फुल स्ट्रेंथ के साथ में ओपन एंड क्लोज करना है। रिस्ट बेंडिंग में ये इस टाइप से रिस्ट बेंडिंग होता है, एंड रिस्ट रोटेशन, ये रिस्ट रोटेशन हो गया। एंड एल्बो बेंडिंग में क्या होगा, हमें शोल्डर को टच करना है, एल्बो बेंडिंग। एल्बो रोटेशन, ये एल्बो रोटेशन हो गया। देन फिर टो बेंडिंग जैसे कि हमारा रिस्ट बेंडिंग था वैसे ही टोस को बेंड करना जितना आगे, और फुल स्ट्रेच करके रखना है, टो रोटेशन। एंड देन फिर आता है जानु नमन एंड जानु रोटेशन। जानु नमन एंड जानु रोटेशन में क्या होता है, पेशेंट को दंडासन में बैठ के और वन लेग स्ट्रेट रखना होता है, और दूसरे लेग को नी जॉइंट से फोल्ड करके और उसके बाद में 90 डिग्री पे स्टेबल रखना होता है, और रोटेशन में उस नी जॉइंट को हमें रोटेट करना रहता है। ये जितने भी एक्सरसाइजेस हैं ये ड्यूरिंग पेन को थोड़ा रिलीफ करती हैं, और जॉइंट का जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको भी मेंटेन रखती हैं। रेस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस दोनों में बैलेंस रखना है, कि रेस्ट भी करना है और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, एक्सरसाइज भी करना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। ए बैलेंस ऑफ एक्टिविटी एंड रेस्ट पीरियड आर इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्सरसाइज मोर व्हेन योर सिम्टम्स आर मिनिमल, जब सिम्टम मिनिमल है तब एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, एंड रेस्ट मोर व्हेन योर सिम्टम्स आर वर्स। एक्सरसाइज हेल्प टू मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोशन। Occupational therapy for splints and adaptive devices. Treatment should be started early and should be individualized. Many recreational activities जैसे कि walking help because these allow movement with little or no impact on the joints. तो पेशेंट जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो मिनिमल जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है जॉइंट्स का, जैसे वॉकिंग है, तो वो उनको डेफिनेटली कंटिन्यू रखना चाहिए। जो जस्ट एज फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर इज टू रेस्ट। व्हेन यू हैव RA flare, your symptom are worse, it is best to rest, reduce inflammation and pain, and to cope up with fatigue that may accompany it. अब आता है होम्योपैथिक मैनेजमेंट। होम्योपैथिक मैनेजमेंट में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स में क्या सिम्टम्स रहते हैं, टू रिलीव स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन। स्टिफनेस और जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए रस्टॉक्स दी जाती है। रस्टॉक्स हेल्प्स टू रिलीव जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस बाय रिड्यूसिंग द जॉइंट इन्फ्लामेशन। जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन रिड्यूस करती है। इसकी मॉडलिटीज हैं जॉइंट स्टिफनेस वर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी, and warm application and motion of the affected joint relieve the symptom. वार्म एप्लीकेशन और जैसे ही पेशेंट मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिलता है। मसाजिंग ऑफ द जॉइंट ऑल्सो ऑफर रिलीफ इन देम। देन इसके अपोजिट मॉडलिटीज में आता है ब्रायनिया। ब्रायनिया फॉर रेड हॉट swollen joints. Bryonia is helpful for cases where joints are red, hot and swollen. The pain are sharp and stitching type के पेन होते हैं। Pain get worse by motion and better by rest, just opposite to Rustox. Warmth may relieve the pain. It is indicated when mostly knee and elbow joint are involved. Apis mellifica for reducing swelling in the joints. Apis mellifica is well indicated medicine where joint is highly swollen. Along with this, the joint is red and inflamed. Joint pains which are mainly burning and stinging type के पेन होते हैं एपिस मेलिफिका में, and are also treated with apis. Joint is also sensitive to touch. Antim crude to reduce pain in finger joint. Finger joint में पेन को reduce करने के लिए worse of pain from cold. They find relief by warm application. Drawing sensation in finger may also felt. Then Actia spicata. Actia spicata small joints के लिए होती है।
Actias spiccata for wrist pain and swelling. Actias spiccata is mainly given for cases where the wrist pain and swelling are present. Wrist is also red and heat. Pain is worse from motion. It is indicated to treat pain and swelling in other small joints of finger, toes, and ankles. Colophyllum is again for small joints. Colophyllum is used for treating arthritis that affect small joints. Small joints are painful and stiff. Joints of the finger, toes, ankle, wrist are affected in such cases. The pain keeps on shifting in minutes from one joint to another. In some cases, nodes are present on finger joints. Next, arnica for markedly tender joint. Arnica is majorly used when the joints are extremely tender. Person has great fear of touching the affected joint due to pain and tenderness. The knee has also sore, bruised pain along with intense swelling. नेक्स्ट है स्टेलेरिया मेडिका. इसमें क्या होता है, सारे बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल जॉइंट अफेक्टेड होते हैं. इज इंडिकेटेड फॉर द केसेस वेयर द पेन इज फेल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द जॉइंट. द जॉइंट्स आर आल्सो सोर टू टच. Stiffness is also present in all the joints. Sometimes the pain shift from one joint to another. Ledum pal for painful and swollen ankles. Ledum pal offer great help in reducing pain and swelling in the ankles. Pain in ankle joint aggravate from movement, and they find relief in it by cold application. They may have ascending rheumatism. Ascending rheumatism मिलेगा इसमें, where pain starts from foot joint and then ascend to the joint above it in the leg. Next, calcarea carb for pain and swelling in the knee joint. The pains are drawing, tearing in nature. The knee is swollen mostly at night time. It is also hot and tenderness to touch. Pulsatilla for shifting pain. The pain keeps on shifting. The affected joint are swollen and red. It is also indicated for joint pain in wet weather. Colchicum for pain that worse from touch. Pain worse from touch. Along with this, they have heat and stiffness in the joints. The joint mainly involved where it is indicated are wrist. इसमें भी wrist joint, ankle, finger and toes joint affected रहते हैं. Most time the pain are worse at night. It is also used in cases of where finger joint are highly damaged and distorted. Next is sanguinea cane. Sanguinea cane में क्या mainly shoulder joint के लिए होती है. Works well to treat shoulder joint pain. Shoulder pain get worse by raising the arm and at night. Next, lithium carb. Pain and swelling and tenderness in small joint. Relief in joint pain from hot application. Ruta. Stiffness and pain in joint of hand and foot. Knot formation on wrist joint. Next, salicylic acid. Joint pain that worse from touch and motion. Shifting pain in all the joints. Next, calcarea phos for joint pain that worse in cold weather. Next, ferrum mat for treating anemia with joint inflammation. Lactic acid, joint pain with excessive weakness. Next, natrum sulph, joint pain that is in damp and cold weather. ये mainly rheumatoid arthritis की therapeutics है. And thank you so much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंशुल. अंशुल आप अपना ये स्क्रीन हटा दीजिए. Okay. स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत ही अच्छा आपने रूमेटिक अर्थराइटिस को डिफाइन किया है, समझाया भी है. इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल सही आपने बताया कि इसमें रेस्ट और एक्सरसाइज में बैलेंस करना बहुत जरूरी है. कि जिस टाइम आप पेन में होती हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर देते हैं उससे भी पेन इंक्रीज हो जाता है. तो आप बैलेंस बनाकर ही इसमें वो बनाए रखे तो ही ठीक होगा. किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, या आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं.
हाँ, थैंक यू डॉक्टर अंशुल। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है थैंक यू सर। और काफी डिटेल्स में आपने हर एक फैलेंजेज और बॉडी के हर एक पार्ट में अर्थराइटिस का जिक्र किया है। एक दवा शायद लगता है कि मैं देखा या नहीं, या कुछ मुझे लगता है लाइकोपोडियम का रोल आपने बताया कि नहीं, पता मुझे पता नहीं है, याद मैं ध्यान नहीं दिया उतना। नहीं बताया लेकिन इन्होंने। नहीं, नहीं तो नहीं एक बताया। केस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। यस सर। कुछ दिन पहले की बात थी और एक यंग मैन अबाउट 40 और 45 के आसपास का होगा। और उसके मैंने जब हिस्ट्री लिए तो काफ़ी जॉइंट्स पेन का ये सब सारा था। डायग्नोसिस बेसिकली हुआ नहीं था, लेकिन सारे जॉइंट स्टिफ थे, काफ़ी जकड़े हुए थे और उनको चलने में जो है तो डिफॉर्मिटीज जैसा मैंने होता है, चलने नहीं पा रहे थे। तो ये सारे होने के बाद में जब मैंने ट्रीटमेंट किया, मेरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ज़्यादा रहता है, तो मेरे सिलेक्शन में लाइकोपोडियम आया। लाइकोपोडियम देने के बाद में मैं जनरली 50 मिलीस्मल पोटेंसी यूज करता हूँ। तो लाइकोपोडियम देने के बाद में उसे काफ़ी लूज स्टूल, डायरिया, भयंकर डायरिया, है ना। अब दिन में 5-10 लैट्रिन हो रहा था। पेशेंट घबराया, मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे डायरिया रोकने की दवा दीजिए। तो मैंने कहा कि आप बताओ, आपका ये आपका कैसा है, आपका वीकनेस लग रहा है, डायरिया से लैट्रिन हो रहा है, इतना आपके पानी फ्लूइड इतने निकल रहे हैं, तो आपको इसमें क्या नुकसान कुछ हो रहा है, कैसा लग। तो डॉक्टर साहब कमजोरी तो नहीं है, लेकिन हम डायरिया से परेशान हैं। मैंने पूछा कि अब आपका जॉइंट्स पेन कैसा है। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा है, आपने जो दवा किया उसको तो ये पता नहीं था कि हम लोग के दवा से डायरिया आया। वो कह रहा है कि मेरे पेन जो है सो काफी, सॉरी, पेन मेरे बहुत रिलीव्ड है। मैं फैलेंजेज है, मैं उसको खोल सकता हूँ, सब ये कर सकता हूँ। तो मुझे आश्वस्त हुआ, मैंने दवा चेंज नहीं किया, मैं प्लेसिबो प्लेसिबो पर चलता रहा। लेकिन पेशेंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूड रहा, डायरिया बंद नहीं हो रहा था। डायरिया काफी ये था, पता नहीं क्यों घबरा करके या कैसे उसने दवा ले लिया, कुछ अंग्रेजी दवा अपना डायरिया को रोकने के लिए, चेक करने के लिए उसने ले लिया। मैं इसलिए इस केस को बता रहा हूँ कि देखिए, होम्योपैथी दवा के बाद में जो एक कैथार्टिक एक्शंस होता है, वो पेशेंट को संभालना और हम लोगों को उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरिया चेक तो हो गया उसके, लेकिन चेक होने के साथ ही उसके जितने जो जॉइंट्स के पेन थे वो फिर वो जहाँ का तहाँ आ गए। तो एक ये अच्छा होम्योपैथिक एक्शन था। होम्योपैथिक उसके इंटेस्टाइन पूरे ब्लॉक थे। और हिस्ट्री में भी जब मैंने केस टेकिंग किया तो उसमें काफी था। मैंने बहुत समझाया उनको कि देखो, डायरिया आपके लिए भगवान के रूप में आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेकर के आया था। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते तो डायरिया भी अपने आप स्वतः खत्म हो जाता। वो आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहा था। मैंने उसको ऐसे समझाया, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जितने गंदगी थे उसको निकाल रहा है, आप खाली सिर्फ पानी पीते जाते और आपको कुछ नहीं होता। वो कुछ दिन तक तो नहीं रहा, लेकिन फिर दोबारा वो लौट करके मेरे पास में नहीं आया। हाँ, क्योंकि वो डायरिया से, पता नहीं, डायरिया उसके लिए ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा। तो एक होता है, पेशेंट को हम लोगों को एक समझाने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। और पेशेंट में ये डेवलप करना पड़ता है कि इसमें क्या है। और मैं देखता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में अगर आप माइजमेटिक अप्रोच लेकर के चलेंगे तो दो तरह के अप्रोच आते हैं। एक होता है कि उसका सेल्फ एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर। आज के जमाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग देख रहे हैं, जो मैक्सिमम पेशेंट जो है सो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमोटाइड आर्थराइटिस किसी न किसी रूप से हम लोग के पास में आते रहते हैं। और सभी के पीछे में उनका लाइफ स्टाइल एक बहुत प्रोमिनेंट होता है। दूसरा केस जो मैं देखता हूँ, उसमें जो प्रोमिनेंट फीचर्स आते हैं खास करके फीमेल में, वो हिस्टेक्टोमी के बाद में। बहुत कम उम्र में महिलाओं को आ, एक बच्चा हुआ या बच्चा नहीं भी हुआ, अगर काफी ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्चार्जेज हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इमीडिएटली यूट्रस को बाहर निकाल दो।
तो लोग आप बचने के लिए निकाल देते। लेकिन मैंने देखा है कि मैक्सिमम जितने भी मेरे पास में मैंने केस देखा, उसमें सभी के बैकग्राउंड में हिस्टेक्टोमी था फीमेल में। तो एक आप ये आपको ये भी बताता है कि आपका जो बैलेंस है, जो आपका जो बॉडी का जो सेंट्रल ग्रेविटी का जो पोजीशन है, वो आपको जहाँ डिस्टर्ब होगा तो वह क्योंकि रिमेटाइड आर्थराइटिस, जैसे अंशुल जी आपने भी बताया, कि एक बैलेंस करने का रोग है। और बैलेंस करने के लिए आपने जो एक्सरसाइजेज बताए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको बैलेंसिंग, जब बॉडी का बैलेंस ही आपका गड़बड़ हो जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, तो उस समय में भी आपको ऑस्टियो ये दोनों कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। एक केस और देखिएगा आपको ओबेसिटी के केस में, जहाँ की पेट बाहर बहुत निकला हुआ है, ये भी आपका डिसबैलेंस है ना। तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है ना, बॉडी का जो संतुलन है, अगर वह मेंटेन्ड नहीं होता है, अगर जैसे प्रोपोर्शनेट बॉडी और का सारा ऑर्गन नहीं हो। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी मोटे आदमी को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, लेकिन अगर मोटापा का इस तरह से हम लोग को देखना चाहिए जिसका कि डिफॉर्मिटी माने डिसऑर्गेनाइज्ड हो। अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है, उसको हम लोग मोटापा के अंदर में नहीं ले सकते हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल हो जाता है बॉडी का, जैसे मान लीजिए पेट बहुत निकल गया, या कोई ऑर्गन जो है साइड है बहुत ये माने एक जैसा जिसका उसका सिमेट्री गड़बड़ा जाता है, तो वहां पर भी आपको इस कंडीशंस को डेवलप करने में बहुत ही चांसेस होते हैं। और इसमें फिजियोथेरेपी का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिजियोथेरेपी खास करके अगर मैंने नी जॉइंट्स के केस में देखा कि अगर वहां पर आप थोड़ा सा नी जॉइंट्स को स्ट्रेच करने के लिए, जिसके लिए कि ट्रैक्शन लोग लगाते हैं, वो भी एक अच्छा बेनिफिट देता है, थोड़ा सा मदद कर सकता है। तो ये सारी चीज जो है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए और रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम लोग ऐसा ये माना जाता है कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, हम लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इनक्योरेबल डिजीज है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर होने के नाते हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि इनक्योरेबिलिटी का जो कहते हैं कि जो अप्रोच है, इट इज नॉट दैट कि इट इज बिकॉज ये आपको ठीक नहीं होगा। हम लोग कहते हैं इनक्योरेबिलिटी का होम्योपैथी मीनिंग क्या है, कि जब तक आपके पास में ये सिम्टम्स है ना, अगर आप सिम्टम्स टोटलिटी को निकालने के लिए सक्षम हैं तो देर इज नो इनक्योरेबिलिटी, है ना। अगर सिम्टम्स का आपका अध्ययन नहीं है या आप पेशेंट में देख नहीं पाते हो, तो उस समय में उस डिजीज को मैं इनक्योरेबल उसको तो इनक्योरेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में सही दवा नहीं है। तो ऐसा हम लोग ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन जो है तो बहुत ही रिमार्केबल है और बहुत ही अच्छा है। आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। अगर आपको इसको इंग्लिश सेशन में भी देना चाहेंगे तो आप मुझे बात बता दीजिएगा। हमारे इंग्लिश स्पीकर्स को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। जो इंग्लिश सेशन हम लोगों का 8 बजे से होता है, उसमें आप आ सकती हैं और इसको भी कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इतना कुछ बताया हूँ, और कोई सवाल अगर नहीं है किसी को। सर, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो आपने बोला इनक्यूरेबल है, बट मेरा कहना है कि हम लोग मियाजमेटिक अप्रोच से अगर देखें तो ये तो सडन होता नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जब भी होता है तो ये ग्रेजुअली होता है, तो हम लोग ग्रेजुअली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी तो इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इनक्यूरेबल क्यों बोलेंगे? आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए, सिम्टम्स होने का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स का क्या होता है। हम लोग 3 एस्पेक्ट में सिम्टम्स को देखते हैं। एक तो पास्ट है ना, पास्ट को देखते हैं, उसका जेनेटिक स्टैंडर्ड को देखते हैं, और एक प्रेजेंट होता है। अगर ये तीनों में, क्योंकि आपको मार्जिन को डिसाइड करना हो तो मार्जिन को खाली प्रेजेंट के आधार पर नहीं कर सकते। जैसा कल का लेक्चर भी आप देख रहे थे, कल का लेक्चर भी आप जो देख रहे थे, तो उसमें आपको क्या दिखलाई पड़ रहा था? कल के लेक्चर में फेशियल एक्सप्रेशंस का एक अप्रोच था, वन साइडेड था, है ना। इसलिए एक वन साइडेड डिजीज
डॉक्टर हेनीमैन ने अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में वन साइडेड डिजीज की चर्चा इसलिए की है कि देयर इज नो वन साइडेड डिजीज। ये वन साइडेड दृश्य जो साइड कहना जो है, ये इसलिए कहा जाता है जहां हम दूसरी ओर लक्षण देख नहीं पाते हैं। वैसे माने शरीर के अन्य भागों में अगर हम लक्षण नहीं देख पाते हैं तो उसी को हम लोग वन साइडेड कहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि दूसरे साइड में नहीं होगा। आपका जब भी अभी हम लोग चर्चा करते हैं सिमेट्री, बॉडी का सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बॉडी के सिमेट्री में अगर एक तरफ झुकाव होगा, समझिए ना, तराजू का पलड़ा अगर एक तरफ झुकता है तो दूसरा वाला तो ऊपर उठेगा ना। वो चीज, वो तो हमको देखने का, और डॉक्टर होने के नाते आपको तो देखना पड़ेगा, देखने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसको सीखेंगे तो आप वन साइडेड डिजीज की कहानी भूल जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें वन साइडेड डिजीज होता है या नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। वन साइडेड डिजीज का डॉक्टर हेनीमैन का जो आप उस फॉर्म लोकल मेलेडीज और वन साइडेड डिजीज को जो आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से उसे फॉर्म को पढ़िएगा। तो डॉक्टर हेनीमैन ने भी कहा कि देयर इज नो वन साइडेड डिजीज, इट इज ओनली आवर विजन, आवर आउटलुक, जो कि मैं देखता हूँ उसके कारण लोगों ने दूसरे पैथी में कहा कि वन साइडेड डिजीज, ठीक है ना। लेकिन वन साइडेड डिजीज को मेरा मानना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर जब आप इलाज करते हो तो देयर इज नो वन साइडेड डिजीज। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि पेशेंट को ये है। अब हम लोगों का 8 बज हमारा गया, टाइम हो गया। टाइम हो गया, तो आप उसको सो ये कीजिए। थैंक यू डॉक्टर अंशुल चाहड़। थैंक यू आप सो फिर मच। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। फिर से आप नए टॉपिक के साथ आइए, आपका ऑलवेज वेलकम है। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो गया, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो यह मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1231st day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Let us begin the session with the 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinars since 1130 days. And today we have a guest from Canada, Dr. SADAF ULDE. She has been practicing since last 15 years, and she has completed her BHMS, and then she had fellowship in psychiatry. She's the director of Healthcare Health Satya Foundation and Binary Intuition. And she is a teaching faculty at the other Song Mumbai. As you all know, she has presented so many clinical cases in this forum, and she has presented so many subjects in different forms, and she is one of the person who has presented a very large number of presentation in the early part of our sessions. And we are proud to have such a wonderful person this evening to talk about some of her clinical experience. Dr. SADAF ULDE, you are welcome to the stage. Welcome, doctor. You can. Thank you, Dr. Danesh. Thank you, Dr. Danesh, and I'm pleased to see you all once again. And so today, without wasting much time, my today's topic is clinical experiences in my practice. We all know, like a week ago, we lost one of the pioneer teachers of homeopathy. It was very shocking news for each one of us. And he was one of the founder of Other Song in International Academy of Advanced Healing. And his name was Dr. Sujit Chatterjee. We lost him battling his disease, but his spirit was so high that when this news came very shocking, because
there is a master course program going on at Other Song, and one of my colleagues was interacting with him to set up an lecture. And, till his last, he was teaching, he was treating his patients. One of my colleagues who's still in India was following up with his patients, called him up and asked for the guidance, and he was still there. So I would like to dedicate my today's session to my teacher. I request everyone to have a 5 minutes silence for him, for a great soul that has left us, to pray for the strength of his family. He has left behind his wife and only daughter, who might be just 22, in between 20-25 years of age. So a 5 minute silence to respect his teachings, to respect his contributions in homeopathy, respect his contribution as a doctor, as a teacher, as a father, as a human being. Okay. So the reason why I am putting so much emphasis on his teaching is because I started off my career, I started off my journey at Other Song being a resident doctor to him. And he taught me what it is to be not only a good doctor, but also a good teacher. And, we say that when I hear, I listen. When I see, but it is when I do, is that when I learn. And he was a teacher who didn't make me sit just beside him and say, okay, just copy paste what I am doing, or just be okay with what I am doing. He gave me space to question his teaching. He gave me space to make my own decisions. And hence, he will be always remembered. And the only way to give gratitude to his teachings and to give gratitude to all that he has done is by taking forward the torch, by taking forward what he taught me and giving it to people, so that it helps you in your cases. And one of his major dream was to help people who are suffering with cancers, people who are suffering with autoimmune disorders. And we will see, like, I don't know how many cases in a day of people suffering from cancer, chronic renal failures, and autoimmune disorders together. And that's when he introduced me to certain concepts. Okay, so, we will try with it. Now we know cancer as a disease is widespreading. It's scary for the patient and the family. It's traumatic. Number 3, we still do not have a definitive cure, even though chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, surgeries are what people talk about, but yet they come with side effects. Many homeopaths do claim that they have cure for cancers, and the miracle can be expected. And of course, there are some teachers who have done great work, like one of my co-teacher, Dr. Sunirman Sarkar, or Parashanto Banerjees, or many other. But when I sat with Dr. Sujit Chatterjee, sir, and we saw cases together, we will see cases which were terminally ill and towards the end stage of the disease.
it used to be challenge, and it used to be that well-selected remedies will fail, despite of, taking minutest detail of the patient, making sure that it's repertoire, it's the materia medica, the sensation, everything is correlated. There will be remedies that will fail. And then he will go and find a remedy. He will go and see if he could prove more remedies. And he did some amazing provings in his lifetime of uranum nitrate, ficus indica, ficus religiosa as a remedy with regards to the mental symptoms, etc. He will also make sure that if a person showed reaction to some remedies, can we prepare new remedies? And he will prepare new remedies. He will ask, like I remember there was one patient who developed sensitivity to a particular drug, and he made sure he could procure that drug and prepare and gave it to Dr. Shrikant Chaudhary in Calcutta and prepare that remedy and gave it to the patient. So he will not limit himself to 30 polycrest remedies. He will not limit himself to what we know. He will go and travel unknown. Like being a sensation practitioner, being a classical practitioner, we often get hooked on to give one remedy, wait and watch. But then if he will not see a result, he will go and he will see if any mother tincture, any rescue, any bat flower remedy, or any other organ-specific remedy could help. And he was among one of those teachers who introduced Burnett into my life. He was one of the teachers who introduced teachings of Grimmer into my life. There are some gem of the textbooks that we don't refer to. There are some, with the modern homeopathic practitioner is so busy proving that homeopathy can do miracle that they have forgot to search the truth. And I think that, and they forgot to experiment and forgot what Hahnemann told us, that hold that what is truth, prove everything that is right. And that's what he will do every day. He will try to learn something new, try to incorporate something new. Very recently, I had one patient of chronic leukemia, and he was constantly losing his WBC cells and platelet counts. And his platelets were continuously low. And whatever best of remedies I was giving, the patient was not getting better. He came up with a very interest. So I went to him and I consulted and asked him, so this is this patient, and somehow I'm stuck with this case. What do I do? And he came up with an extremely rare remedy which really helped the patient. I'll tell you the name of the remedy. It's a bit complicated, but it did wonders to the patient. Just give me 1 sec. I'll share with you the name of the remedy. I'm sorry. So this patient was suffering from plasma myeloma, an extensive disorder, despite of every remedy that was given to him, despite of bone marrow transplantation, immunotherapy, etc., etc. This patient was not responding, and that's when Sir initially gave him Diospyros kaki. Diospyros kaki as a remedy. That was the first remedy.
that was given to him. And this remedy was proved by Jeremy Sher. It's a tree, Crevel Kaki tree. The main thing about this remedy is it looks very closely. If you see the symptoms superficially, this remedy looks like bryonia. Okay, you feel like when I went on with this case, I was very sure that this is a bryonia case. It is a tree. Diosporus kaki in Nagasaki is a symbol of world tree. Okay, it was related a lot to the war. Okay, it has themes of war and it gives a lot of strength, and hence this particular remedy has very much impacted by plutonium bombing, okay, which happened during World War II. Okay, it stands, and despite of everything that got destroyed, the tree did not get destroyed. Okay, and this tree became the symbol of survival and hope. And hence, Jeremy Sher and many other teachers found that, and that was Dr. Sujit Sir's experiment also, that this remedy, when you have a bryonia-like picture and you're very sure about it, okay, and it's cancer, the one remedy that he used was Diospora kaki because it has the effect of plutonium, which is used in the actinide for the bombing, and it has the tendencies and its effect on the cancer cells. Okay, so this was one of the remedies that he used, and then later he introduced many remedies which were like otherwise we will not use it, and it really helped the patient from various aspects. So this is one of his style of practice. And coming back to the topic, okay, I'm getting notification of people wanting to join, so shall I take a note of it, or there's somebody is looking after it? Okay, so one thing was dealing with such cases. Another is proving. Third is use of remedies like actinides and lanthanides. So like I said, he would always go and rem into which, not just limit yourself, cancer, carcinosin, cancer, scirinum. He will go above and beyond to find newer remedies that can help the patient. He used red remedies, but although he was trying to find new remedies, although he was trying to soar high, he will always get back to his basics. Basic materia medica, repertory, basic books like Kent, Boric. He was an avid reader of Boric materia medica. Careful investigation was something that he really believed in. He will always tell me that, remember that we are humans and we are not God. So we are just the facilitator of cure. And it's not, don't let a good patient or a good outcome make you believe that you are the one who's going to cure everything. That's not possible. You are just the one who's going to facilitate through. Okay, you're just an instrument. So always be humble about it and put realistic expectation on yourself, and also give that expectation to the patient. Once, we often come across this situation in our practice where patients come and tell you that, can you guarantee the cure?
Can you tell me that especially people with desperate illness want to hear that you are going to cure it all, and it's going to be like a magic wand, and all the disease is going to go away. And he warned us from doing that. He's like, we try our best, but we do not guarantee that, because some diseases like cancers can have a very outward turn. And if you put in a promise which is, which may not come true, will not only be disappointing the patient, but you will also be disappointing a lot of things, and you'll get stuck into a lot of issues. And that's how he said that whenever a patient will ask you, especially with the terminal illnesses, what you can do, always promise a better comfort, better care, and tell with transparency what is the result. At max, you will lose a patient, but you will go to bed with a satisfaction that you did what is right. He was always open, even at this age. Like I remember one of our patient, we had a very severe case of a psoriasis, and the case was with the whole body of this patient looked like a tomato, along with scaling. It was red, it was full of scales. He was a 20 years old gentleman, full of scales of psoriatic eruptions, red like tomato, and he had weird warts. And he was treated by various homeopaths with various remedies. And finally, the case was dealt with our team, that is Dr. Sujit, sir, myself, and we had one more doctor in our team, Dr. Manish. And when we three sat together with this case and we did the case work, and we gave him the first remedy, that is leprominium, okay? And the patient did wonderful. But in the follow-ups, the psychotic tendencies came up very strongly. And he asked, and there were a lot of things that were going. We repeated the dose of leprominium quite frequently, and patient was not doing better. And that's when I took a retake. And I went and I did my studies in chronic. I picked up, those days I was studying chronic disease by Dr. Hahnemann. And I came up with a line in chronic disease where Hahnemann said how he treats diseases with multiple miasms, okay, the complex diseases. And he spoke about addressing the dominant miasm and then with an antipsychotic, and then going back to the different layers of the miasm. And I showed this presentation, and during that time with other song and with the sensation group, the practice was only of one remedy, and giving a remedy like an anti-miasmatic was not well taken by the teachers there. But when I showed him the proof, and when I showed him that, sir, this is what I learned, he didn't have this ego that I'm a teacher and how do I take it from a student. He just accepted it and he said, okay, let's give and see what happens. And next day, the patient came miraculously with all warts gone, and his skin improved. And that's when we gave him another remedy. And ultimately, this chap was suffering from this erythematous psoriasis for I don't know how many years, since his childhood, with so much traumatic impact on the body, on the mind, not only got better with his skin, but got emotionally healed. He will never get out of his house, started working, got a job, and finally got married and he did send us an invite for his wedding also, saying that, look, how you guys have changed and impacted the life. So that's what was more important. And these teachings I take every time in my life, that be open to learning and respect
maybe your style of practice is not what is my style of practice, and you may not agree with what I do, but be open to the learning. Be open. Maybe there will be one case that you are struggling with, and you will then see that, okay, this remedy worked. This remedy had an impact, which I saw over there. And that's how you can do better in your practice. Okay. Now, with this ode to him, I'd like to move to the next set of my presentation is with a case example. Just give me one sec. Okay. So, like I said, one of the most important thing is experimenting, and learning is the key in the clinical practice. With this, we'll move to the next set, and I like to share a simple case, or it's not actually a simple case, but it was one of the case that I had did few years back, and this case was of small cell carcinoma of lungs, 80 years patient. He was a known case of COPD. Just 1 minute, I just put it into a slideshow. He was a known case of COPD. He had suffered from tuberculosis twice, followed by diabetes. He was on allopathic treatment. Later, he off and on had cold and cough, which most of the time doctors will say that it's once he got treated falsely for tuberculosis, sometimes they will treat him because of his COPD. But over a later, they found out that this was a small cell carcinoma. Now, this disease had a severe impact on him, but on his physical health. But what he described is that despite of the disease and his chemo, he underwent chemo, he underwent radiation, and he was not getting any better. He was only getting worse. But even though all this thing was happening, he never left his work. Even while his chemo was going on or radiation was going on, he was very dedicated. And his family described that he pushes himself. Even if the illness is at the worsened point, he will push himself above and beyond to take care of his responsibility. He never keeps himself first. He will not take care of himself, but for him, the staff, the family members, the work always came first, and he will go above and beyond to make sure that he carries out his responsibilities on time. When we asked him to describe about himself, he described himself as an independent, self-made man who started from nothing and now is the owner of a huge empire. His family said he's very strong and he will not go to the doctor unless things are out of control. In so many years of my life, he said, I never took a sick break. Even now, when I am hospitalized and with chemotherapy, radiation, I am not taking a break. He had long paroxysmal cough and he will get breathless. And there were a couple of incidents where he lost his balance. He got unconscious while coughing. He cannot lie on the left side where the tumor is. He read, now during this time, so he was having a factory in pharmaceutical industries. So he likes reading old books. He has read
a lot. He was an avid reader, voracious reader. He would read a lot of different books. He will read books related to law, pharmacopoeia, etc. He was very fond of homeopathy, and he has read extensively about homeopathy, but he will never self-medicate himself because he said that that's not my forte. I'm not a doctor, so I should not. I just read books out of interest, and because I'm into the pharmaceutical industry line, I deal with chemicals. I wanted to read and have knowledge about it, but I never medicate myself or my family by myself. I always send them to a good homeopath and not practice by myself. I know my responsibilities. I know what I am meant to do. So he was, and I'm very conscious. So he was with this strong sense of conscience of right and wrong, good and bad. Like he will not let anything go out of his hand. He loved singing. He loved writing things. He loved presenting. And so even when he will prepare for he was somebody who will not go anywhere unprepared. So also to just give an introduction about, when we say we observe the patient. So this was one thing we observed about him, that when he entered our office, he entered with a lot of dignity at the reception, at the front desk. His interaction with the front desk was with a lot of respect, and he greeted them. He came in dressed, primed, and proper, with all his file arranged well. And as soon as he came, he was reverent to Sir. And before presenting the case, in a very minutest detail, he explained his condition, his medication, and he was well read, and he came prepared. He went on the website, he came prepared, reading about a lot of other things, and reading about homeopathy, reading about us, how do we operate. And he presented the case in a format as if he was a presenter, okay, like in a very proper, prim and proper method. He says that whether it is accepting a tender, whether it is sending out my application for a tender or signing a tender, I will not do it randomly. I will do it by preparing myself. So he will do a thorough research. He will read all the books. He will do proper research. He will prepare himself. He will look into the good, the bad, the right, and the wrong of the particular tender. And then he will sign or apply for a tender. He will not blindly, just because it will bring in money, he will not blindly sign any tender. He says, I will not argue with anybody. He was somebody who will not get into arguments. He will not get into any discord, especially if he has no knowledge about it. So, for example, he said that when his treatment started, before he could reach out to his doctors in oncology, he himself studied about his disease. He researched all the possibilities, okay? And he researched what is his disease, what is the scope, what is the limitation. He said, even I have studied about how much homeopathy can help me, how much it is not. So if I come to you, I don't come to you blinded by somebody's referral. I come to you with my proper research and study and understanding of what you can give me and what you cannot. I never challenge anyone that this is right or this is wrong. I will try to find it out. If I'm not satisfied, so for example, when I'm reading, I'm preparing for something, and if I'm searching for an answer, I'm reading a book, I don't get an answer, I will go to a new book. If the new book doesn't give me an answer, I will go above and beyond to see different editions of that book. I may also go to the older. So in that way, he has different editions of books with him, and he will make his research very thorough before going ahead.
In his life space of situation, he said, my parents passed away when I was very young. I came to Mumbai without any support. He came up in life and now, without any support, he struggled and now he has many company. A complete workaholic, self-made man. He said, and then we said, what were the qualities that made you that? So he said, I was somebody who will never give up. I stood firmly. With that, he makes this hand gesture of firmly. He lost his wife, he raised his son, they made them capable. He says, whenever I make a decision, I am firm with it. I don't get bothered by situation. So before taking homeopathy or starting treatment with you guys, I made sure that I did my research. I made my column of pros and cons. And then when I have now decided, nobody can take me here and there with whatever happens. I follow what my heart says. And my decisions, once I take, come what may, I stand by it. I don't get wavered out by anybody's influence because my decisions are made after a careful investigation. Once I take a step, I don't believe in thinking and deciding. I believe in deciding and making it a success. So once I take a step, I will complete it. There's no step back from it. I will keep pursuing hard for what I want. I never give up till the end. No looking back now. And in all this journey, I always had a divine guidance with me. I did a lot of hard work and was very firm and spiritual. And again, he gives a hand gesture of firm. I never asked anyone for help. I did everything by myself. When asked about his worst situation in life, he laughed. And the son describes that in period of 1985, when his wife was not well and eventually she died, at the same time, he had a several financial loss where all the asset, even the house was about to be sold and even daily basic necessity was difficult to meet. But in those situations also, he worked and worked and worked and did not show any sign of panic, stress, or pressure. In fact, he was handling all the situation. Like he said that some of my family members, relatives came up and told him, oh, tumse nahi hoga, just give it up. It's time that you give it up. You don't bother yourself with so much. But he didn't listen to them. He never gave up. He never panicked. And he kept working very hard. We asked this to the patient and asked him to describe. He said, there's only one thing. I never lose hope. If I am in a situation and I decide that I want certain things to happen, I will be firm, I will be determined, and I will be hopeful that I will come out of it. Working hard and trying different ways. If one way doesn't work, I'll pick up another way. Whatever it comes to, I never give up. And I told my relative that till the last drop in the ocean, I will fight my situation. I was always good to people, whether it's my employees, whether it's my subordinates, whether they are my superiors, I was always good to them. And then the son said, yes, he takes care of his employees like his own kids. He takes good care of them. And that is the reason why even they stand for him despite of difficult situation. He says that I am somebody with a good energy, and because I am honest, I am responsible, I have some good connection. With that, my circle kept on increasing. My key to my success is hard work, study, try to find what is best, which can be done. I never give up. I fight. I'm determined. And next important is I do everything with a good plan of action, organizing, building my team. You should be there. You work hard and let your people know that you are also working hard. So you set up example. I never treat them like a worker. I do
it as my own work, and then they follow me. They follow me by example because I have done better. So this was more or less the case. So what do we understand from this case? What was the most important thing? The most important thing that came up in this case was his need to endure and persevere, a very strong sense of responsibility, need to be strong, firm, and determined. So the remedy we gave him was osmium 30, 200, 1M in plusing potency. Okay, 3 times a day for 3 days. So about this remedy is from row 6, column 8. Okay, the row 6 issues being of responsibility, leadership, need of power, and ability to withstand high pressure. The attack at this level 2 is of very high degree. So when you are at row 2, you are like a baby who needs to be cared, who needs to be nurtured. Row 3, you develop your identity, your choices. I like this, I like that. Okay, I am this. So the name, hence you have natrium, you have magnesium, where they come with the identity crisis. Alumina, natrium, your head belongs to others because they don't carry their own identity. And they look up to somebody to make a choice, to make decisions for themselves. They're happy with love, nurturing, care, choices, little bit of ego developed, and they're happy with that. And also you will see the diseases that develop at this level are more related to skin, nutrition needs, like deficiencies, like hair fall, skin tendencies, allergies, simple diseases. But as you go further, row 2 is mostly you will find a lot of psychiatric disorders coming in that because they're like this baby who has no ego at all and everything penetrates and everything is so strange for them. They need to be in the womb of the mother. And the womb of the mother is what they want. I remember a 65-year-old man coming to me, and he was a working CEO of a company, but his whole issue was he felt unsafe, and that's the reason why he went into depression. And then he gave a complete womb experience and wanting to be in the womb. But as you go further, like when you go to 4th row, this row is about protecting your family, protecting yourself, development of right and wrong, good and bad. It's like the stage when you're gone to school and you're disciplined, where you're taught about what is right, wrong. The fears get incorporated, fear of punishment, guilt. The sense of guilt comes in row 4. Okay, they need the basic necessities like food, clothing, shelter, finances, health. That's the issue. Basic money, day-to-day living. These are the workers of day-to-day life. And as you go further, you get creative people like the actors, the performers, the presenters, the managerial level, where you have to be creative, where you have to be in a certain, you need to have a research, you need to learn and dive into new things and experiment and get into new. But when you go to row 6, it is the line of leadership responsibilities. So now just food, clothing, shelter is not enough. Now the ego is developed so much that you need power. And hence, if you see, this is the remedy where a lot of syphilitic tendencies come up. In row 5 and row 6, they are heavy metals. So you have to, major metals fall under row 5. Some you see in row 4, like zinc, zincum metallicum, ferrometallicum, are in 4th row, cobalt. But in row 5 and row 6, you have heavy metals like gold and silver, platinum and palladium. Row 5 is palladium line or silver line, and row 6 is the gold line. So you have gold, you have platina falling under this line. So here, the question comes of how you can handle the capacity, how you can handle the leadership, how you can
handle responsibility? How much can you resist high pressure? There's no longer challenges. There is no longer creativity. It's no longer about food, clothing, and shelter or health. It's about how can I prove myself to a larger group? And that is row 6. And the intersection, so you have rows and then you have columns. And then in the column 8, you have this need to resist high pressure. The column 8 is just the column of Ferrum or the Ferrum series, where you need to resist, you need to be firm, you need to endure, you need to be tough. Okay. So, perseverance in handling responsibilities, perseverance in going against that is not okay for your company or for your people or for your kingdom. You go against resistance, pressure, opposition, you stand firm up to your responsibility. No one can shake you. You do not submit to pressure. Okay, that's row 6, column 8, and you have the remedy osmium metallicum in this. Okay, this was his PET scan before treatment. This is after. So yes, this is the case. And what we learn from this case is that higher the disease travels, deeper the disease, deeper the syphilitic diseases, you will need more syphilitic remedies. You will need, so in every disease, you just don't see the mind aspect, or you are not just focusing on the body, you focus on the total. Okay. Also, such diseases like small cell carcinoma or any of these diseases, there's one thing to show before and after, but this before and after does not happen overnight. It doesn't happen in 3 months, 4 months. It takes years. Okay. It takes a lot of different steps that you need to take. And that's what we learn in our day-to-day practice, that these cases, then there are a lot of challenges. Sometimes what happens is the patient gets physically and mentally better, but the pathological reports do not change. And that's when you introduce a lot of different remedies in practice. So it's never an easy road to take up these cases and to blindly. We need some time for discussion, so I think it can conclude now. Yeah. So we have to go above and beyond in this particular diseases to help them. Okay. I will not say cure them, but help them with the diseases, especially cancers, autoimmune disorders, and the pathological conditions like renal, complete renal failures, etc. Okay. So this is one of my experiences with pathological cases and my experiences learning from Dr. Sujit. So that's it. The wonderful presentation. In fact, no other words to describe a man with 80 years of age and with carcinoma, and it is resolved with medicines, with single medicine. That's the most important and interesting thing, and it showed how much effective it is and what the magnitude of effort we need to take in order to cure each and every case. The Hahnemann principles are very much there. That is relevant and practical, not at all fancy. Time for discussion. Those who would like to participate, please go to the participant list and raise your hand. You mentioned about the first one medicine, which was that medicine that wasn't there in the screen sharing. That was not there. The one medicine is set the first case. Please unmute. You are muted now. Diasporic Aki. And write the name of the remedy. So on the chat. Yes.
That was just a very impromptu case. It's not on the presentation, guys. Sorry. It just came to me because early morning, like I just spoke to that patient and Yes, it is better to put in the chat box. I have put it in the chat box. Yeah. So there's a very less reference about it. There is, I think, you will find the symptoms of it incomplete, and it's one of the Jeremy Shares proving. So you can go to Shares reverse repertory and you can get a lot of information about this remedy. You can obtain this remedy from Helios, and yeah, it might not be available in India. You will have to get this remedy from Helios or Remedia Pharmacy. Which pharmacy? Would you please repeat? Helios. Okay. Helios Pharmacy, or you can, what do you say? Remedia Pharmacy. Yes, the name you are not put in the chat box. I'll put it in the Yes. chat box. Yes, yes. DYSPORI, Spori Kaki. Okay. Yes. Okay, yes. So these are the two pharmacies where you can obtain this remedy. So yeah. Okay, now it's Dr. Dhanesh. Yes, Dr. Dhanesh. Yes, Dr. SADAF, it's really a very good session from you. And the International Forum for Promoting Homeopathy also have the uses this opportunity to say our condolence as well as our prayers to the beloved Dr. Sujit Chatterjee. Really, it was a big loss. Then once you describe about him, then only we had such a big personality he was. Anyway, we, on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, we are all praying for him. This is what I would like to add. Yes. Doctor, the first case is the plasma myeloma, isn't it? Pardon? The first case was plasma myeloma. Am I right? Yeah, plasma myeloma. Then the second case is a small cell carcinoma. Okay. Wonderful presentation. Now, Dr. Sergi, are you there? We would like to hear from your comments, Dr. Sergi. Yes, Yes. hi. And I'm here and I'm very happy to hear this two really brilliant case. And congratulate Dr. SADAF. I'm very happy. And I have a patient, osmium patient, and very little child. And he has juvenile diabetes mellitus, and I use it before. And really appreciate it. And I'm very happy to hear your cancer patients and very easily handle him. Thank you so much. And I don't know diasporic kaki. I read about them, and I have needs. I'm really, I know that I need it. Thank you so much. Thank you. Yes. Now, Dr. Ram Pravesh. Yes. Thank you, Dr. Sadal Madam. Very nice presentation, an excellent session, good experience, beautiful experience, and clinical case carcinoma, and teach according to law of homeopathic science. Very nice, excellent session. Thank you, madam. Thank you. आइए हमेशा आइए. Thank you. Thank you. Okay. Dr. Ram Pravesh is a regular participant. Yes. Very positively, always waiting, watching with a lot of patience. That's the most important thing. You just said about your teacher, mentioned about we are not humans, but not God, but human. Then should have a realistic approach. Then we must open to